Okay, guys. Let's start. So we had discussed about this particular reading in the previous session as well, and we had talked about the three things that this reading talks about. So again, to remind you of the issues that are basically covered in this particular reading, there are three issues which this reading talks about. First is the performance. The first issue that we had discussed was about the performance of agriculture. And in the performance of agriculture, we have talked about growth rates, we have talked about diversification of agriculture and when we talk about transformation within the agriculture, we talk about multiple things. That how growth rate in agriculture has moved from cereals to other commodities and then to non-rural, non-farm jobs as well, especially in terms of construction, and also in terms of the incomes. We had talked about that how incomes have spread out. So we had talked about the structural transformation that has happened in the agricultural sector, along with the growth rate and along with certain other measures like variability in agriculture. The second issue that we had talked about was the issue of equity in agriculture, which was basically where we talked about the concept of Gini coefficient, the concept that how there's the large number of farmers in India. To give you a statistic, 86% of farmers in India are small and marginal farmers, and they control only 46% of India's land. Whereas the largest farmers just the 12%, 14% large farmers have control over a majority of share of farming in India. So in that way, it's inequitous, and it is also reflected in the Gini coefficients, where you see that in terms of income Gini coefficient and in terms of wealth Gini coefficient, we are doing really poorly as compared to consumption Gini coefficient. And then we talked about the fact of the environmental concerns, especially with respect to the new age changes in terms of urbanization, climate change, sustainable development goals. So how do we merge all these factors together for the agricultural sector to grow sustainably? So these are the three narratives that we were talking about in the previous session. So the first part of the paper that we have already covered was how has India progressed on these three goals in the last few years, and then we had talked about certain policies, but now we are going to talk about certain reforms as well. And the second reading that we are going to do, there's definitely be a question that will be asked this year from that particular reading, either a part question or an entire question on that reading. So you need to cover that particular reading properly, and that's also very important if you're going to appear for any kind of an entrance exam, the Indian Economic Service or the Indian Administrative Service exam. So these two readings become extremely important, not just for your current year, but for the next 2-3 years as well. Now, so we had talked about these changes. We had talked about, so this is the first part where we are kind of reviewing the performance in the agriculture. We talked about agriculture plus, that we need to focus on other areas within the agriculture. We had also talked about that how growth in agricultural GDP has taken place. And we have seen that although agriculture has been a laggard as compared to the other sectors, but the period between 2004 to 14, we saw that the agrarian growth was quite high. Having said that, the government also had this goal of doubling farmers' income. Remember, the Dalwai Committee, which talked about that we need to double farmers' income between 2015 till 2022, which essentially translates into a 10% GDP growth rate. And that has not happened in the years that have gone by. Then, in terms of volatility, what we have also seen is that the volatility in agriculture has gone down. So you can't remember all of these data points, guys. You can't remember all of these data points, but the general, the reference and then the general trend you should at least remember. So when you're talking about these things, so you have to talk about the production, you have to talk about coefficient of variation, you have to talk about your growth rates. So these things at least you should remember that what has happened, and decline in prices in the recent years. So these are just pointers that you can remember. You can't remember all of these figures. That is something that you can't remember, and don't even try to remember these figures.
Until unless you have the reading in front of you, until unless it's an OBE, you can't remember all these figures. So, but the general trend, the general narrative of the reading should be clear to you. Then we have talked about the structural transformation within the agricultural sector, where we had discussed about that how we have been moving from nutri-cereals to oil seeds and fruits and vegetables. Then from agriculture to allied activities, especially fisheries and livestock. Livestock basically is now contributing almost 30% of your overall agriculture and allied services, which shows that there is considerable diversification that has happened within the agricultural macro sector. And then we are also seeing from the last 15-20 years, especially after the introduction of NREGA, that there is a structural transformation that has happened in the rural setting from agriculture to rural non-farm jobs. Especially there has been an addition of the men folk towards or affinity of men folks towards construction sector. So we had discussed this part. All of this we had discussed, rural, non-rural. Then there was another thing which is going to be quoted again and again, that when you talk about doubling farmers' income, you need to know that where is the income coming from. You should know that अगर आप कह रहे हो कि किसी की इनकम डबल करनी है, तो आपको एटलीस्ट इनकम का सोर्स पता होना चाहिए ना, कि कहाँ से डबल करोगे, किस कंपोनेंट को डबल करोगे. For example, if I earn X amount of money, that X amount of money, some part is coming from Gargi College, some part is coming from, say, Labasna, some part is coming from IIPA, and some part is coming from my startup. So if I want to double my entire income, I am basically saying कि अच्छा किसका component, अगर मुझे इसको double करना है तो मैं कौन सा component easily double कर सकता हूँ. So that is where you need to figure out that how that doubling of farmers' income, what component is important. So there have been two surveys that we have talked about. One of them was the NSSO and NSS survey, which talks about कि हमारा जो farming and livestock का जो share है वो 60% है, whereas the NABARD survey says that it's only 42%. Whatever survey that you pick up, you now know that at least 40 to 50% of the income comes from non-farm sources, and you cannot ignore that particular source if you want to double farmers' income. ठीक है, तो वेज लेबर का शेयर अगर आप नाबार्ड के बारे में बात करोगे तो इट इज 33-34%. So it is extremely important. हाँ, just a second. हाँ, अभी पापा पढ़ा रहा है. चलो, ये पापा की सारी चॉकलेट क्यों तोड़ दी है? चलो बाहर जाओ. Yes, sir. So that's one thing. Then the other issue that we had talked about, so this is the second part where we are discussing about the equity concerns. We had talked about the small and marginal farmers, उनका जो land share है small and farmers, larger farmers का 86%. This statistic you should remember, guys. So it can't be that you are just generally quoting stuff. ठीक है, कहीं ना कहीं तो आप statistic डालोगे. So there are certain statistics that you should remember, and you should take a pointer out of it. And that is where you will find the difference between a topper and an average score in Indian economy. A topper would remember certain data points to qualify what he or she is talking about. Okay. So this is where the key marks are earned, especially when you come to comp. यहाँ पर आपको realize नहीं होगा, but when you come into competitive space, this is where the make and break comes कि किसी के 250 में से IS के एग्जाम में 100 मार्क्स आ रहे हैं और किसी के 140 मार्क्स आ रहे हैं. So this is what you quote. So similarly आपका land fragmentation के बारे में बात करो. एक स्टूडेंट कह रहा है land fragmentation हुई है और दूसरा स्टूडेंट कह रहा है land fragmentation हुई है और कितनी fragmentation हुई है कि 2.2 हेक्टेयर से वो 1.1 हेक्टेयर हो गई है, which shows that you are putting statistic to qualify your answer. So these are statistics that you should remember. Then we had already talked about Gini coefficients and how these Gini coefficients work. State-wise or intra-state इतना important नहीं है. I don't think you should go too deep into it. इसमें nutrition में इसका बहुत बड़ा impact है, क्योंकि यहाँ पर again बहुत inequity होती है when you compare states. If you compare the outcomes or outcomes in terms of nutritional outcomes of states, बहुत ज़्यादा inequity होती है. If you compare the nutritional outcomes within castes, within general, if you compare castes, general caste versus say OBC versus SC versus ST,
यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस न्यूट्रिशन का आ जाता है, न्यूट्रिशनल आउटकम्स का आ जाता है. So therefore agriculture is required. So you can't ignore agriculture there, as well as you can't ignore agriculture if you're really serious about poverty alleviation, because number of studies have shown that agricultural growth rate is at least 2 times to 3 times more effective in eradicating poverty as compared to the other two sectors that you have. Then sustainability, this was the other thing that we were talking about, that we have to make sure that agriculture is more sustainable in the 21st century. We need to ensure that we are meeting the sustainable development goals, we are meeting the climate change goals, we are talking about the soil health, we are talking about the erosion problem, the groundwater problem. So, and one of the ways to solve all of them together is to enhance and to utilize the technology available today. So you have multiple startups, you have applications of artificial intelligence and machine learning, where you can practice new age agriculture. So in my class, I used to give, I mean, we don't have the time, but I used to give this example of there is this documentary on Netflix called Business of Drugs. When your exams are over, try to watch this doc series, and उसके अंदर एक particular वो है, you have a particular episode on marijuana. See the marijuana farming that US is doing right now. कितना technologically advanced industry ही बना दी है उसको. And Israel is kind of following a similar technology, similar stage of work in both in tomatoes and other commodities. Israel as a country, अगर आप देखो तो it's completely arid, surrounded by theocratic states, साथ में ओशन है, छोटा सा स्टेट है. तो बट एग्रीकल्चरली देखो कितना सेल्फ सफिशिएंट एंड फ्रेश सी वाटर को फ्रेश वाटर कन्वर्ट कर रहा है आज के डेट में और एक्सपोर्ट कर रहा है. सो विच शोज दैट टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड. जो हमने कल बात करी थी, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इज द वे फॉरवर्ड if you want to practice sustainable agriculture. Then what has happened is that the green revolution, the kind of green revolution we followed, was economically in short term was very beneficial, but ecologically in the long term was not beneficial. Therefore we need to look forward towards what is called as evergreen revolution, as well as zero farming, जहां पर आप जीरो बेस फार्मिंग या जीरो बजट फार्मिंग बोलते हैं इसको, जहां पर आप कोई पेस्टिसाइड्स, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करते. सो these are the way forwards. And we had talked about कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा उन एरियाज में होगा जहां पर इरिगेशन नहीं है, जो रेन फेड, जिनको बोलते हैं रेन फेड एरियाज, एंड सबसे ज्यादा खारिफ का रेन फेड पे इम्पैक्ट. Then we had talked about, so this was the other part, that what are the policies. So this was the part कि policies क्या होनी चाहिए, policies में macroeconomic policies क्या होनी चाहिए हमारी. As we have already talked about that the solution lies in non-agricultural sector as well. You can't just rely on the agricultural sector. We know the reasons, diversification and then doubling farmers income. वही बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे आपको डबल करनी है. Then apart from some issues, वो जो हमने कुछ issues डिस्कस किए थे वो हैं मार्केटिंग एंड प्राइसिंग. इसके बारे में हम आज बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज one of the laws that we are going to deal with, the APMC law, is about this marketing policy. I've not dealt in the macro framework that I usually teach agriculture. I've taught that way in the class at Gargi. That is the way it's ideally agriculture should be taught. That first you should know the macroeconomic concepts of agriculture, and then you should dwell into these particular issues. So we did not have time for that, but maybe in one of the videos I'll probably post that up. Okay, so we were talking about marketing, and in marketing again, if you remember that one of the issues that farmers are facing, especially in the recent times, was that the agriculture per se was not very profitable. The terms of trade which we talk about, the terms of trade for agriculture was averse, and agriculture becomes unprofitable. So for that we provide these MSPs, but at the same point of time MSPs remain on paper. They are hardly practiced except for Punjab and Haryana and Western UP. They are hardly
There's hardly any procurement from the rest of the part of the country, and it's usually restricted to a certain crops, mainly rice and wheat. So there is this huge lobby that is there of these northern Indian farmers and traders. Majorly we'll talk about these traders as well, जिन्होंने political capture किया हुआ है on this particular market, and that is why उनका political capture इतना strong है कि they did not allow these formulas to be introduced, to be actually implemented. Marketing reforms, we'll talk about these marketing reforms today as well. We had discussed about the APMC reforms, but we are going to go for a deeper dive into these marketing reforms, that कहाँ पर marketing में issue आता है एग्रीकल्चर में, और ई-नाम जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, notwithstanding the fact that ई-नाम itself के अंदर काफी सारे issues अभी भी हैं. It's not a perfectly architectured system. Then we had also talked about shift from serial based policies to non-serial based policies, and to develop more post harvest management system, because हमारा ये जो post harvest management system है ये बहुत weak है. We only process 10% of our food, and whereas the advanced countries at times process 70 to 80% of their food. So we are not utilizing the most productive, the value addition part. So वो जो value addition हो सकता है agriculture के ऊपर, वो हम अभी भी utilize नहीं कर रहे, and that is basically the missing middle of marketing in the agrarian sector. So this is the sunrise, so as the sunrise sector in the coming few years. Then all of that we had talked about water and technology, especially in technology, and यहाँ पर हम बात करते हैं investment की, public investment की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, उसको आपको इंक्रीज करना होगा, एंड स्पेशली आपको R&D के अंदर, रिसर्च के अंदर पैसा डालना होगा, तभी आप ये क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कर सकते हो. विदाउट पुटिंग मनी इनटू R&D यू कैन नॉट क्रिएट a resilient and a smart agricultural sector. Right now you're spending only 0.6% of agrarian GDP, again a figure that you should remember, 0.6% of agrarian GDP on R&D, and you need to improve that, so that at least you are, you have agricultural scientists, you have people who want career in this particular field. So this is something required. In fact, you might be surprised कि Delhi School of Economics के और FMS के बीच में एक agricultural economics का center है. My entire life was at Kirodimal and at Delhi School, at least the graduation and post-graduation period. And it was after that period that I realized कि अच्छा agricultural economics का कोई center भी इतना बड़ा building है यहाँ पर. So which shows कि किसी को पता ही नहीं है वहाँ कौन है, कैसे है, कभी कोई building नहीं खोली देखी उसकी. So which shows कि this is something which is not working for us right now. We are not promoting agricultural science right now in our education or in our industries as well. Whereas if you see, the modern companies, like there's this company called as Monsanto, उसका Indian subsidiary version है Maheko. So they spend crores of rupees, crores and millions of dollars just on agricultural science and scientists, creating new seeds, creating new pesticides, creating new fertilizers. So it is a multi-billion industry. In fact, there's a very good documentary. You don't have the time for it, but try to search for it. अगर कहीं Google वगैरह पे मिल जाए, you can probably associate it with it, the next reading even better. Food Incorporated, Food Inc. Michael Moore की है, he is the director. It's a wonderful documentary on corporatization of agriculture in the US market and the impact of it. So if you have time, go through that particular documentary as well. Then coming to research technology, what I was talking about. Now, inclusiveness, that what we also need to do is that we need to make our agriculture more inclusive, because ultimately we know that 86% जो हमारे farmers हैं वो small and medium farmers हैं, और हमारा average land holding जो है वो गिरे जा रहा है. So we need to focus on that, and there are multiple risks that are associated with agriculture. There is production risk, there is weather risk, there is price risk, there is credit risk, there is market risk, and there is policy risk. ये बहुत सारे risk हैं. You should remember all these risks, guys. I would urge you, जो लोग especially जो लोग UPSC लिखना चाहते हैं, ये risk लिख लें.
I'm not elaborating these risks, but in my UPSC usually sessions, I do elaborate on each of these risks. They're very important for you. और कहीं पर भी अगर आपको इशू लग रहा है कि अच्छा यहाँ कोट किया जा सकता है, तो ये रिस्क जरूर लिख लेना, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क, कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, वेदर और डिजास्टर का रिस्क एक फार्मर हमेशा फेस करता है, प्राइस का रिस्क कि एमएसपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मार्केट में प्राइस क्या होगा, अगर एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा, क्रेडिट रिस्क की टाइम पे मुझे पैसा मिल पाएगा फॉर सोइंग और नॉट, फॉर फर्टिलाइजर और नॉट, मार्केट का रिस्क है कि मार्केट का प्राइस क्या होगा और मुझे बेचने को कहाँ मिलेगा. वील टॉक अबाउट दैट इन द कमिंग रीडिंग एज वेल, दैट मैं अपने मुझे लोकल हाट में बेचना पड़ेगा कि मुझे कहीं और बेचना पड़ेगा कि मुझे मिडिल मैन को बेचना पड़ेगा. एंड पॉलिसी रिस्क की कई बार गवर्नमेंट कह देगी कि मैं बैन कर रही हूँ एक्सपोर्ट अपना करना, ठीक है, कई बार इंपोर्ट का अलाउ कर देगी. सो ऑल ऑफ दीज रिस्क आर देयर which make agriculture a very I would say gamble or a gamblesome occupation per se, or a avocation. So this is a major issue, and see, the income of the small and marginal sources from all sources is only 1/10 of that of the large farmers. So you need to think about the small holding farmers and how to improve their incomes. In terms of credit, how do you increase their share of credit, especially through organized credit, not through informal sources. So that is something that you need to work on. Another sector that you need to work on is the eastern region of the country, where the poverty and the inequality is the highest. So वहां पर आपको agricultural productivity increase करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स बहुत लो होती हैं, यहाँ पर यहाँ क्रॉप जो यील्ड है वो लो है, यहाँ पर स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है. So all of these are issues that are faced in this part of the sector. So this is another area that you need to focus on. Apart from women, that we talked about, that nearly 75% of rural women work in agriculture and they do a lot of hard work as compared to men. And men का जो share है वो सिर्फ 60% है. So we need to enhance their rights in agriculture in terms of tenancy rights, in terms of them owning land, selling land, making contracts. So all of these rights needs to be given to women cultivators as well. Youth का मैंने आपको बताया था अभी. Policy for sustainable agriculture, again, just read through whatever I had told you. How do you basically make agriculture evergreen revolution, and you should have this integrated approach and you should use technology. Climate change की भी same चीजें जो हमने बताई, smart agriculture कैसे practice करोगे. So I've highlighted these points for you. Another way, zero budget natural farming, that I told you that basically Andhra Pradesh was one of the states to adopt it, where you do not use any fertilizer and pesticides. Another issue which has been raised by a lot of people for climate change is vegetarian versus non-vegetarian climate change. People who consume non-veg are also contributors to climate change, because ये जो आपके poultry farms होते हैं या आपके cattle farms होते हैं या pig rearing होते हैं, all these animals are ruminating animals, and ruminating animals जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. उसकी वजह से आपका मीथेन की वजह से आपका और ज्यादा, एक तो फूड स्टॉक बहुत ज्यादा ले जाते हैं ये लोग, वाटर का सप्लाई बहुत ज्यादा ले जाते हैं, और बिकॉज ऑफ रूमिनेटिंग एनिमल्स, रिगर्जिटेटिंग जो एनिमल्स होते हैं, ये मीथेन क्योंकि ज्यादा एक्सेल करते हैं, दैट्स हाउ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर, therefore they contribute a lot towards your greenhouse gases. So it is said that vegetarianism to a certain extent also helps in reducing the impact of climate change. And then you should have institutions and infrastructure and governance in terms, especially in terms of farmer producer organizations. This is an example, like Amul ki sare farmers milke cooperative बनाए, and then they start marketing their product and then start trading with the trading in the market. So the government needs to do that. The government needs to also invest in common land pool resources, panchayats, one panchayats for forest products, watershed development. So all of these are again suggestions of governance of how to improve agriculture. There's not much to it in this part. So essentially, if you want to see the entire summary, so in summary we are talking about only three things, macro things. One is the productivity and growth.
the other is equity concerns, and the third thing is sustainability. Just make pointers of our progress for each of these heads, make pointers of our progress and suggestions, policy suggestions. This would be my recommendation for you for this particular reading. All right. Any doubts, guys? This particular reading. This is one of the biggest readings, and that's why I couldn't hear Arya. I'm going to assume that there are no questions. First point was productivity and growth. What has been the productivity and growth other than progress and suggestions? I'm not getting. So what has been the progress? जो हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ का प्रोग्रेस क्या है, इक्विटी का प्रोग्रेस क्या है, या कितना हमारा स्टेट, व्हाट इज द स्टेट राइट नाउ, सस्टेनेबिलिटी का स्टेट क्या है, और उसके बाद जो सेकंड हाफ ऑफ द रीडिंग में हमने कहा कि सजेशंस क्या है, कि रीडिंग ने सजेशंस क्या दिए, पॉलिसी सजेशंस क्या दिए, वो हमें हर एक पार्ट के ऐड करने हैं. इस तरीके से मेक अ पेज ऑफ so how do you prepare for Indian economy papers? You can't open this particular reading and start reading it and वो हो जाएगा. There's no way that you can do this this way, especially in subjects like Indian economy. तो आप ऐसे cover ही नहीं कर सकते. Yes, research was 0.6% of agri GDP. आकाश, not GDP, agri GDP. Difference है. GDP हो गया ओवरऑल GDP, agri GDP हो गया इसका एग्रीकल्चर का पोर्शन, और इस एग्री जीडीपी का 0.6% हम उसकी बात कर रहे हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव टू साइड्स, नॉट मोर देन 2 साइड्स. 2 साइड्स में पूरा आर्टिकल समराइज हो सकता है, ठीक है. इनफैक्ट ये एक साइड में भी हो सकता है. 3 इश्यूज, उनके की पॉइंट्स आपको लिखने हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स लिखने हैं, इक्विटी के डेटा पॉइंट्स एंड की अभी परफॉर्मेंस, सस्टेनेबिलिटी के की पॉइंट्स एंड उसका परफॉर्मेंस अभी तक. फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में उनके पॉलिसी मेजर्स क्या है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, डबलिंग फार्मर्स इनकम के क्या पॉलिसी मेजर्स है, जस्ट नोट डाउन सर्टेन पॉइंट्स. इक्विटी को कैसे आप कंसर्न ठीक कर सकते हो, और कौन कौन से कंसर्न आपको ध्यान में रखना है, एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए आपके पास क्या कहना है. दैट्स ऑल. आई थिंक 1 पेज में आप पूरा समराइज कर सकते हो, छोटी सी राइटिंग में हो. एंड दैट इज हाउ यू स्टडी फॉर इंडियन इकोनॉमी. Because otherwise you will just go round in circles to understand कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना. About getting the rhythm of the subject, and then Indian economy है, इसमें आप ज्यादा और मतलब ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं. कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ा ना इकोनोमेट्रिक्स का कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. जो आपको आता है वो भी सब कुछ ठीक है. Then let's now go through this particular reading. This reading is, for me, this reading is one of the most important readings of your syllabus this year. I definitely expect any sensible teacher making the paper should definitely have a question from this. And because of the current relevance of this particular reading. So if you talk about the agricultural market reforms, first of all. तो एग्रीकल्चरल जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं आपको ये पता होना चाहिए. You need to know their names at times, ठीक है. It can be a handful to remember their names, but try to remember in whatever way that you can, ठीक है. Now, when you're talking about these agricultural market reforms, you need to first understand कि agricultural markets हैं क्या, ठीक है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि agricultural markets क्या हैं. फिर उसके बाद आप एग्रीकल्चरल मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में बात कर पाओगे. नाउ अब अगर हम इंडिया का अगर हम मार्केटिंग का इंस्टीट्यूशन देखें तो फार्मर्स को ट्रेडिशनली फार्मर्स इन इंडिया आर नॉट अलाउड. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फार्मर्स मार्केट और इफ यू टॉक अबाउट the marketing as an institution in India, तो मार्केट्स मैं एज एन इंस्टीट्यूशन मानता हूँ. जो हम 4 आईज के बारे में बात कर रहे थे एग्रीकल्चर में, तो मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है. अब इस इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ट्रेडिशनली फार्मर्स इन इंडिया आर नॉट अलाउड टू सेल आउटसाइड द मंडी. नाउ मंडी इज अ प्लेस, इट्स अ गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्लेस जहां पर कोई भी जिसके पास भी लाइसेंस है, ट्रेडर हो गया या एफसीआई हो गया या होलसेलर हो गया, ये लोग मंडी पे आके ट्रेड करते हैं, ठीक है. और यहाँ पर ये जितने भी ट्रेडर्स हैं ये लोग सारे के सारे एक लेवी देते हैं. यहाँ पर मंडी फीस होती है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, जो स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है, ठीक है. तो और इसीलिए जो हरियाणा और पंजाब की जो स्टेट की जो मंडीज है ना,
ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल इसलिए क्योंकि यहाँ से फूड प्रोक्योरमेंट के लिए एफसीआई बहुत सारा खाना ले जाती है, और ये क्योंकि जहां पर पैसा है वहां पॉलिटिक्स होगी, और जहां पॉलिटिक्स है वहां पर पॉलिटिशियंस होंगे। तो ये जो मंडीज है, जो एपीएमसी मंडीज है नॉर्थ इंडिया की, ये पॉलिटिकली आर वेरी स्ट्रांग। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में 3 कमोडिटीज जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग होती है। इफ सम ऑफ यू गेट इनटू द सिविल सर्विस एंड स्पेशली इनटू आईएएस, you will realize as district magistrates, one of the toughest elections to manage is not actually the elections of, okay, I'll answer that question later. So one of the most important or one of the most difficult or challenging elections is not the state elections or the central elections, it is the elections of these committees. यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स बैठे हुए होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, एंड काफी वायलेंट होता है। नॉर्थ इंडिया के केस के अंदर शुगर केन के लिए, राइस के लिए, व्हीट के लिए, एंड स्पेशली फॉर महाराष्ट्र शुगर केन, कॉटन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लॉबीज हैं यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी पोलिटिसाइज्ड इशू बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल or their finances, their entire income are dependent, a lot of politicians are dependent on this particular architecture. Now terms of, I will get to that as well. Let's first finish this particular section. Your one section will be complete, then we'll get to other sections as well. We'll also do in tomorrow's class, we'll also do Rakesh Mohan, which is again a very important and a technical reading. So one by one we'll cover stuff, don't worry about it. Now I am already recording this lecture. So when we are talking about farmers and mandi, so ये जो farmers है वो इस मंडी में आके बेच सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं बेच सकते। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक क्वाजी मोनोपोली बना ली है अपनी यहाँ पर, कि यहाँ पर लोग बेचेंगे। Now apart from that, this is one law which restricts the marketing architecture. It's something like, imagine कि अगर आपके पास कह रहे हो कि मुझे ऐड चलाना है, तो आप सिर्फ फेसबुक पे चला सकते हो, आप गूगल पे ऐड नहीं चला सकते, आप अमेजोन पे ऐड नहीं चला सकते। तो वुडंट दैट मार्केट बी वुडंट दैट बी नॉट फेयर फॉर यू कि सिर्फ फेसबुक पे अगर आप काम कर सकते हो? रिमेंबर दैट इज व्हाई वी वर नॉट, इंडिया रिजेक्टेड दिस थिंग, फेसबुक बेसिक्स, जो फ्री में इंटरनेट दे रहा था। नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट भी यही था। सो यहाँ पर भी सेम इशू है कि व्हाई नॉट गिव फार्मर्स द ऑप्शन and why not give private traders the option to make any particular place a mandi? So that is one of the reforms of APMC. APMC reforms एक वो पार्ट है। दूसरा जो इशू है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जरूरत स्पेशली इसलिए भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो एवरेज होल्डिंग है वो गिरती हुई जा रही है। 2.4 हेक्टेयर 2.5 हेक्टेयर से गिर के वो 1.0 हेक्टेयर हो गई है। ठीक है, अब ये डेटा कैसे याद होगा आपको? ये कहीं ना कहीं आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली अगर यू आर गोइंग टू बी अपियरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, तो आपको कुछ डेटा पॉइंट्स तो याद करने ही पड़ेंगे। दिस इज वन डेटा पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। तो अब आपका लैंड फ्रैगमेंटेशन जब हो रहा है तो आपके पास जो लैंड है वो सस्टेनेबल नहीं है। इतनी लैंड पे आप टेक्नोलॉजी और आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं कर रही है, एक्सपेंसिव एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। The way out is to contract your agriculture, क्या तो उसको लीज कर दो। एक तो ये चीज है। दूसरा जो तरीका है कि आप पहले ही एग्रीकल्चर में जब आप जा रहे हो, आप उससे पहले ही अपने फार्म का जो प्रोडक्ट है पहले ही बेच के चलो। इसमें क्या होगा, that suppose I am contracting an agreement with, I have a farm and I am contracting an agreement with say Pepsi company, or say ITC जो bingo chips बनाता है, and I tell them that okay, I will give you 1000 kilos of potatoes and you need to give me this amount of money. So this is a kind of a contract that is being formed between the farmer and a corporate entity. ठीक है, जिसमें आप क्वालिटी के बारे में बात आएगी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बात आएगी, और किस तरीके से एग्रीमेंट साइन होगा। सो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हाउएवर इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, वील टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स के। हमारे यहाँ जो फार्मर है उसको कितना पता है कि क्या एग्रीमेंट में क्या लिखा है और क्या नहीं पढ़ा। ही इज नॉट अ लॉयर। Whereas on the other side, corporations like Amazon or corporations like ITC, they have the top-notch lawyers with them.
So the farmer does not have the wherewithal to challenge the might of these entities. So it's not a trade between equals per se. So this is one of the challenges for the farm law. The concept was right, but there needs to be put in a lot of check and balances mechanism to make it right. But that does not mean that that does not mean कि आप पूरा का पूरा law ही हटा दो. So that was again political factors की वजह से we had to do away with the laws. And the third thing was Essential Commodities Act. अब इंडिया के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आपको लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आपको अच्छी चाहिए, ठीक है, तो ये सब कौन करेगा? ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो काम नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर करेगा. एंड इफ द प्राइवेट सेक्टर इज सपोज टू डू ऑल ऑफ दिस, दे विल एक्सपेक्ट दैट please do not impose restrictions on us on holding certain quantities. You cannot intervene in terms of policy. आप रोज रोज के टाइम पे पॉलिसी में इंटरवीन नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि आज प्राइस इसका ये होगा, आप इतने किलो इसको रख सकते हो, इतने किलो टोमेटो रख सकते हो, इतने किलो अनियन रख सकते हो, वो नहीं चलेगा. सो फ्रीइंग अप द मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस वाज द एम्फेसिस बिहाइंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की इसके अंदर बोला गया कि ओनली इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस जब प्राइसेस 50% से बढ़ जाएंगे या 100% से बढ़ जाएंगे तब सरकार जाके इसके अंदर इंटरवीन करेगी मार्केट में, नहीं तो सरकार इंटरवीन नहीं करेगी. सो दिस वाज द इंटेंशन बिहाइंड द फार्म लॉज टू ब्रिंग to somehow increase or somehow make agriculture more remunerative and increase investment, especially private investment and private startup investment into the agriculture. Increase the efficiency of agricultural, increase the total factor productivity, but at the same point of time there are concerns which were not addressed properly. The concerns that you are essentially trading with you're going to on the other hand we will have farmers on one hand and you will have corporates on the other hand, and they are not equal players. It is not a cooperative model that you are putting up. कोऑपरेटिव मॉडल जैसा अमूल जैसा मॉडल जो था उसमें फार्मर्स भी, बायर्स भी, सेलर्स भी कॉर्पोरेटिव्स थे और जो बायर्स थे वो भी कोऑपरेटिव्स थे. कमर्शियल कोई भी नहीं था अमूल के सिस्टम के अंदर. बट यहाँ पर जो सेलर है हो सकता है कि वो कोऑपरेटिव बना ले अपना, कि आपस में मिलके 50 फार्मर्स ने मिलके अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया. बट जो दूसरा सेल जो 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 बायर है वो तो कॉर्पोरेट एंटिटी है. एंड दिस इज एन अनइक्वल रिलेशनशिप जहां पर इशू आएगा. कई जगहों पे इक्वालिटी इस चीज में भी कब खत्म होगी कि जो स्टेट्स हैं, हो सकता है गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि हम एमएसपी, गवर्नमेंट ने कहा चलो तो एमएसपी रहेगा हमेशा, बट सपोज अगर ये जो मैं मंडीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो वाइबल मंडीज हैं, वो मंडीज वाइबल कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है फीस लगाती है, ठीक है. सपोज एज अ फार्मर मेरे पास दो ऑप्शन है that I can take 1000 kilos of wheat to a government mandi and I can take or I can take it to a private mandi, और प्राइवेट मंडी में मुझे ज्यादा मिल रहा है प्राइस, तो मैं प्राइवेट मंडी में बेच दूंगा. बट अगर ऐसा होगा और बहुत सारे फार्मर्स प्राइवेट मंडी में चले जाएंगे तो पब्लिक मंडी में जाने के लिए कम आपके पास ऑप्शन बच जाएंगे, और जब कम बच जाएंगे तो ये मंडी बंद हो जाएगी एक टाइम के बाद, क्योंकि इसको सस्टेन करने के लिए आपके पास इस पे मंडी लेवी जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है उसी से तो ये मंडी चल रही है. तो अगर वो ही खत्म हो जाएगी, अगर ये गवर्नमेंट की मंडी खत्म हो जाएगी तो दैट मींस इन इफेक्ट आप कह रहे हो कि एमएसपी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एमएसपी तो इसी मंडी में मिलता है. सो देयरफॉर दिस माइट बिकम अ प्रॉब्लमैटिक इशू अगेन इन टर्म्स ऑफ इक्विटी. So this is just a short summary of the entire reading that I've given you. Now let's talk about this. So these laws that were introduced. These laws were basically introduced, yeah. So to increase the competition in the output market and create more efficiency, and स्पेशली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लिमिटेशन है उसको आपको ऊपर करना है. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर पार्टनरशिप्स वर्क बेस्ट व्हेन दे आर बिटवीन इक्वल पार्टनर्स, बट यहाँ पर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं एंड दे आर कम्पीटिंग विद द लार्ज मोनोपोलीज. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब आप कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है. इंडिया में 7.5 लाख विलेजेस हैं, 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं.
एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के इन सब में चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। सो दैट मीन्स दैट अ लॉट ऑफ मार्केट्स इन द हिंटरलैंड, छत्तीसगढ़ के अंदर सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जाके अगर आप किसी गांव के अंदर जाओगे तो वहां कहाँ कॉर्पोरेट जाके वहां पर प्रोडक्ट खरीदेगा जाके? सो एसेंशियली दिस विल ओनली रिमेन इन सर्टेन कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। जो आपको इनइक्वालिटी अभी दिख रही है एग्रीकल्चर में, वो और ज्यादा एक्सटेंचुएट हो सकती है अगर ये इस तरीके से प्रैक्टिस हुआ। सो यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एक्सेसिबिलिटी अगर आपको इन सबका बेनिफिट करना है। नहीं तो आपकी जो मार्केट्स बनेंगी प्राइवेट मार्केट्स, ये एक्सक्यूज मी, तो ये जो प्राइवेट मार्केट्स बनेंगी ये अर्बन एरियाज में, मेट्रोपोलिस के आसपास ही बन के खत्म हो जाएंगी। they will not be there in the rural areas, again accentuating the amount of inequity or inequality that is there. Then finally ecological dimensions जो है वो कैसे resolve होंगे through this, that is also to be seen, क्योंकि market का काम है profit कमाना, उसको ये मतलब नहीं होगा कि आप ecologically farming कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। So these are the issues that are there. Now these are the this is the name of the three laws. The first name is Farmer Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Law. This is nothing but APMC को लेके है। Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance, ये जो है ये contract farming का है। And Essential Commodities Amendment Act 2020. Now there are certain non-negotiable concerns when it comes to agriculture. One of the first non-negotiable concern is कि food security होनी चाहिए। You can't compromise on food security, which is a very with very difficulty we have achieved this food sovereignty that we are living with. So we cannot compromise with that. So that is one prime goal, and food sovereignty से ही linked हमारे nutritional outcomes हैं, which we have also seen in the previous reading. Then the other thing is that farmers income must steadily rise. जो हम doubling farmers income के बारे में बात कर रहे थे कि हमें एग्रीकल्चर को रेम्यूनरेटिव करना ही है और किसी तरीके से 2x। इनइक्वालिटी शुड नॉट राइज, अनसस्टेनेबिलिटी, ऑलरेडी इनइक्वालिटी हमने पिछली रीडिंग के अंदर बात करी है कि ऑलरेडी काफी हाई है व्हेन वी टॉक अबाउट द गिनी कोएफिशिएंट्स फॉर wealth and for income in terms of agriculture, in terms of rural area. So we need to control that. And sustainability जो है हमारी एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, एग्रो क्लाइमेटिक फार्मिंग होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज को हमें देखना है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखना है। सो वंस यू गेट अ हैंग ऑफ एग्रीकल्चर ना, मतलब वंस यू गेट अ हैंग ऑफ एग्रीकल्चर, आपको पता है कि वो सारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, सिर्फ थोड़ा कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा, थोड़ा डिटेल चेंज हो जाएगा, थोड़ा डेटा चेंज हो जाएगा, बट बार बार हम सेम चीजों के बारे में ही बात करते रहेंगे। सो वंस यू गेट दैट मैक्रो आर्किटेक्चर, उसके बाद आपको जरूरत फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी रीडिंग किससे क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, आपको पता है कि मटेरियल क्या है, आपके पास सारा मटेरियल पड़ा है, आप कहीं से भी कुछ भी उठा के डाल दो, सब कुछ ठीक है, टिल द पॉइंट दैट यू आर आर्ग्यूइंग वेल। देन नाउ अ ब्रीफ ऑन एग्रीकल्चर। हमारा ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारा कितना एग्रीकल्चर कैसा है, और हमारा इरिगेटेड लैंड कितना है, रेन फेड लैंड कितना है, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है, एंड लार्ज फार्मर्स बहुत कम है। कुछ हर स्टेट के अंदर अलग क्रॉप है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश शुगर केन के लिए नोन है, कर्नाटका कॉटन के लिए नोन है, हरियाणा पंजाब इस चीज के लिए नोन है, वेस्टर्न इसके लिए नोन है। सो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया की एग्रीकल्चर के अंदर भी। देन देयर आर सर्टेन पॉइंटर्स अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर, यू कैन प्रॉब्ली रीड दोस पॉइंटर्स। नाउ कमिंग टू मार्केटिंग, जो हमारा इशू है ये पहले हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग बताता है, जहां पर 1928 के अंदर रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर बैठा था, एंड दे स्टार्टेड। इससे पहले जो मंडीज होती थी वो कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड होती थी, जहां पर एक पुअर फार्मर आता था और एक रिच लैंडलॉर्ड या मर्चेंट आता था ट्रेड करने के लिए, तो बहुत अनइक्वल पावर के साथ ये ट्रेड होती थी। उसके बाद सबसे पहले पंजाब में 1930s के अंदर ये मंडीज का एक्ट आया, जिसमें मार्केटिंग कमिटीज बनी और रेगुलेट होना शुरू हुआ। बट इट इज ओनली इन द 80s व्हेन वी स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल ये मंडीज को हमने रेगुलेट करना शुरू किया। एपीएमसी एक्ट जो है 1955 आया, जिसमें आपने ये जो प्राइस मिस इन्फॉर्मेशन होता था कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, कोई एक्सेसिव आर्बिट्राज की एक मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस है, दूसरी मार्केट में कम है, आपने मार्केट्स को ज्यादा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया, एंड स्पेशली मार्केट्स के अंदर जो वेइंग होती थी वो आपने ठीक करी कि 1 किलो बिकम्स 1 किलो इन ऑल मार्केट्स,
तो ये सारी चीजें जो है आपने एपीएमसीज के थ्रू अपना एटलीस्ट बेसिक रेगुलेशन करना शुरू किया 1955 ऑनवर्ड्स। इसके दो मेजर वो थे कि एक हमारी मार्केटिंग इंप्रूव हो और दूसरा एक लोअर प्राइस सीलिंग रहे मार्केट के अंदर, सो दैट एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनके पास एक मिनिमम इनकम सपोर्ट रहे हमेशा। सो दैट वाज द रोल ऑफ दीज एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमिटीज इनिशियली। बट रिमेंबर एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो जो हर स्टेट की जो एपीएमसीज होती है वो उसके लॉस से डिफाइन होती है। इट्स नॉट अ सेंट्रल सब्जेक्ट, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। Therefore, there are going to be wide variation in terms of the practicing of agriculture. There are around 7,500 APMCs in the market, and each of them could be different from other. So ये APMC का brief वो है, ये मैं आपको already बता चुका हूँ कि क्या brief है. And one of the cornerstones of the APMC is to give economic incentives to the farmers for a satisfactory and a dependable price, to establish a minimum support price for the farmers. And 1985 के बाद से Government of India also has come up with MSPs, और government अपने FCI के through इन मंडी से खाना उठाता है। बट अगेन इन प्रैक्टिस ये जो खाना उठाया जाता है वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से उठाया जाता है, एंड मेजरली कुछ ही कमोडिटीज में उठाया जाता है। इन रियलिटी व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है उनके पास एक्सेस होता ही नहीं है मंडी का। तो वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये जो है ये लोकल मार्केट में जिसको हार्ट्स बोलते हैं, ठीक है, उसमें उन पे जाके अपना कमोडिटी बेच देते हैं। वहां से लोकल मर्चेंट्स इनका जो है खाना खरीदते हैं और फिर आगे जाके एपीएमसीज में बेचते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स हैंड चेंज होता रहेगा फूड कमोडिटी का, और एवरी टाइम हैंड इज चेंज अ पर्सन विल try to capture some amount of economic profit out of it. Therefore, there will be a huge difference between what the consumer at the end of the day ends up giving away and what the farmer actually gets. तो ये जो ballooning हो रहा है middleman का, उसकी वजह से एक major problem आता है यहाँ पर। Then, so why change? One of the issues is that there has been a sharp increase in non-crop produce, horticulture वगैरह produce बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। At the same point of time, horticulture we have already seen कि इसमें काफी ज्यादा production fruits and vegetables में diversification हमने पिछले रीडिंग में बात करा, but almost a quarter of that is wasted. 25% wastage है इस आइटम के अंदर, which at times cost 1 lakh crore rupees, $14 billion का नुकसान हम कर रहे हैं हर साल, और इनमें बहुत वाइड फ्लक्चुएशंस होती हैं कई बार, ठीक है। सो दीज आर इश्यूज जहां पर गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट आ जाए इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर तो काफी गेन किया जा सकता है, वेस्टेजेस को कम किया जा सकता है, और गवर्नमेंट और इंडिया एक्सपोर्ट्स के टर्म्स में भी बहुत गेन कर सकती है। देन the other issue is that APMCs were supposed to be constituted by a committee of farmers, but as I told you in the initial part that ये politicize हो गई है। यहाँ पर बड़े बड़े लैंड ओनर जो है वो माफिया की तरह कंट्रोल करते हैं अब मंडीज को, और ट्रेडर्स और बायर्स जो है वो पार्टनर बन गए और एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स का। सो देयर इज करप्शन, देयर इज मोनोपोली, देयर इज कार्टेलाइजेशन, जिसकी वजह से प्रॉपर प्राइस मैकेनिज्म यहाँ काम नहीं करता है। और कई जगहों पे कई स्टेट्स के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करती। दिल्ली के अंदर जैसे नहीं हो रहा है, बिहार के अंदर एट टाइम्स नहीं हो रहा है, तो कई बार जो रेगुलर गवर्नमेंट्स है वो भी फॉलो अप नहीं करती है। देन इन सर्टन स्टेट्स एफसीआई इतना ज्यादा बाय कर लेता है कहीं उनसे कि वो सारा का सारा खाना वेस्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एफसीआई के पास भी जो स्टोरेज फैसिलिटीज होती हैं वो एक नॉर्मल वेयरहाउस वाली स्टोरेज फैसिलिटी होती है, ये मैं यूजुअली सिविल्स में पढ़ाता हूँ, और दूसरा जो होता है वो होता है कवर्ड एंड प्लिंथ, सीएनपी बोलते हैं इसको। अगर आपने देखा हो वो देखा है व्हाट इज दैट कॉल्ड, तरपाल बोलते हैं हिंदी में, एंड फ्लेक्स बोर्ड्स, आपने फ्लेक्स बोर्ड शायद से देख सुने हो। फ्लेक्स बोर्ड्स टाइप ऑफ उसके ऊपर शीट्स के ऊपर खाना रख दिया जाता है, बोरियां रख दी जाती हैं और ऐसे रेलवे स्टेशन पे रख दिया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज कवर एंड प्लिंथ काइंड ऑफ स्टोरेज। तो क्योंकि हरियाणा पंजाब से हम इतना प्रोक्योर कर लेते हैं कि वो हमारे पास जगह ही नहीं होती और वो खाना वेस्ट हो रहा होता है। सो दैट इज अगेन बिकम्स अ ह्यूज इशू। देन the next issue is in terms of assured prices and assured market price, which is very much needed, and especially
This is needed in the current time because you need to shift the farmers choices of crops. हमें किसी तरीके से पैडी को रिमूव करना है हरियाणा और पंजाब से, हमें किसी तरीके से शुगर केन को रिमूव करना है फ्रॉम वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो हमें एग्रो, इसको हम बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक फार्मिंग, ठीक है। अगेन दिस इज अ कंसेप्ट व्हिच आई यूजुअली टीच इन ज्योग्राफी, दैट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 17 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। मतलब हर जोन को डिफरेंट एरियाज में बांटा गया है, एंड उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली और उस जगह की सॉइल, उस जगह की ह्यूमिडिटी, उस जगह का एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली सर्टेन क्रॉप्स आर डिसाइडेड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो वो जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उसके हिसाब से आपको एग्रीकल्चर करना चाहिए, और ये काम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किस तरीके से लोगों को शिफ्ट करा पाए हम towards this agroclimatic zone. Then there have been a couple of examples of relaxation of APMCs. One of the paragons of that has been the state of Karnataka. Then at times we have seen that the farmers are not, even if the MSP is available, the farmers are not at times able to sell to the government. Why? Because अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को FCI के थ्रू बेचोगे तो आपको पैसा बाद में मिलेगा, और अगर आप इमीडिएटली अगर आप ये जो प्राइवेट प्लेयर को MSP से कम पे बेच दोगे तो आपको इमीडिएटली पैसा दे देंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट टाइम लैग, बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज, एंड एट टाइम्स पर्सनल रिलेशन भी होता है। आप किसी ट्रेडर को जानते हो और आपको सपोज आपके घर पे शादी या किसी की डेथ हो गई, तो आप उस ट्रेडर के पास जाके पैसा ले सकते हो, बट आप ये काम अमेजोन से उठा के नहीं ले सकते, ये काम आप बिग बास्केट से नहीं कर पाओगे। सो इंटरपर्सनल रिलेशंस आल्सो मैटर इन दीज मार्केट्स एज वेल। So despite the fact कि वो हो सकता है कि exploit कर रहे हो, then so these are the new laws। ये मैंने आपको पहले लॉ बता दिया कि ये पहला लॉ क्या है। They are now they can sell their product in these markets. Now the new law permits trading outside the trade area, farmgates, farmer processes, कहीं पर भी आप बेच सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जो दूसरा लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता है, एंड इसमें फार्मर्स कैन एंगेज विद फूड प्रोसेसर्स, राज रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स के साथ में। और अगर यहाँ पर आपका कोई इशू आता है तो यहाँ पर 3 लेवल डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। पहले आपका कॉन्सिलिएशन बोर्ड है, फिर आपके पास SDM के पास जाओगे, और उसके बाद फिर DM के पास जाओगे। पॉइंट यही है कि ये मैकेनिज्म समझना और 30 दिन के अंदर ये खत्म होना इम्पॉसिबल है। इंडिया में हम लॉज बना देते हैं बट वो फॉलो कभी नहीं होते। DM जो होता है, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, कम से कम नहीं तो 100 कमिटीज का हेड होता है। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को 2 साल में ये भी नहीं यूजुअली याद होता कि कौन कौन सी कमेटी की कितनी मीटिंग्स हो गई हैं। सो that's how busy a district magistrate becomes. So it will be, और एक ही मीटिंग के अंदर, एक ही हियरिंग के अंदर ये सब कुछ रिजॉल्व करना at times becomes difficult. So you are putting unnecessary, I mean you complicated the system first of all. दूसरा कि will that be resolved in 30 days? These are major concerns with respect to the contract farming act. Apart from that, framing of the agreement जो है वो इसमें बात की कि एक क्रॉप सीजन से शुरू हो सकता है और मैक्सिमम 5 साल तक हो सकता है, एंड इसके अंदर प्राइस भी मेंशन होगा, इसमें अंदर क्वांटिटी भी मेंशन होगी, ये सारी चीजें मेंशन होगी। डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 30 डेज के अंदर ये चीज पूरी हो जाएगी, ठीक है। देन थर्ड लॉ जो है आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि देयर विल बी नो मार्केट रिस्ट्रिक्शंस इन नॉर्मल सिचुएशंस, only in extraordinary situations that the government will be regulating the prices of cereals, but potatoes, onions and stuff. Stock limits कोई भी अब withdraw कर दिए जाएंगे कि इससे ज्यादा आप स्टॉक नहीं रख सकते हो, and the only limitations will be imposed when the retail price of horticulture products increase by 100%। तो कोई कमोडिटी अगर 100 रुपए की थी और 200 रुपए की हो गई अगले साल तो हो जाएगा, या फिर अगर कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी 100 रुपए की थी और 150 रुपए की हो गई तब हो जाएगा। Except for these 2 cases, the government will not intervene in the market. Then, what are the general issues related to this particular area or these particular laws? जो general concerns है usually, जो हमने कुछ discuss करी है but कुछ नहीं करे। General concern एक है कि आपका आज की डेट में अगर मार्केट में प्राइस नहीं मिल रहा होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो फार्मर बेचारा क्या करता है, वो या तो अपने लोकल MLA के पास जाएगा या MP के पास जाएगा। बट एक बार ये कंप्लीटली मार्केट डिटरमिन हो गया, अगर मान लो
कि सपोज मैं एक ऑफलाइन मार्केट में था, जैसे मेरे घर के पास एक बहुत बड़ी मार्केट है वेस्ट दिल्ली में विच इज कॉल्ड एज ज्वेलरी मार्केट। अगर किसी ट्रेडर को प्रॉब्लम है तो वो वहां से आकर उसके एमपी के साथ बात कर सकता है, एमएलए के साथ बात कर सकता है कि देखो मेरे साथ इस मार्केट में ये प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर आप अमेजोन को बेच रहे हो, अगर आप फ्लिपकार्ट को बेच रहे हो, तो वो क्या करेगा, एमपी और एमएलए क्या करेगा वहां पर उस काम का। सो देयरफॉर इन अ प्योर प्ले मार्केट डिटरमिन्ड regime, this channel of redressal that the current that farmers have right now will start to fade away. Then apart from that, there is the fact that the government has to spend all of this on the storing of all these things will also go away. But at the same point of time, government needs to still hold certain amount of buffer stock, because it's such a strategic reason. You can't just go away with, and you can't just completely wash off your responsibility कि हम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को स्टिल लार्ज क्वांटिटीज होल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि फूड सिवेरिटी अगर आप कंट्रोल करनी है और मेंटेन करनी है तो सो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट कांट जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर। देन इट इज सेड दैट ये जो नया प्राइवेट सेक्टर आएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा, मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगा, ई मार्केटिंग लेके आएगा। But the issue is that is the farmer, the small and marginal farmers, which are 86% in number, are they trained enough? Are they trained enough to utilize this particular architecture? क्या उनको इतना नॉलेज है कि ये अडॉप्ट कर सकते हैं ये पूरा आर्किटेक्चर ऑफ ट्रेडिंग? सो दैट इज अनदर इशू। देन मंडी फीस का जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारी मंडीज जो हैं जो एग्रीकल्चर की हैं वो इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि सारे फार्मर्स वहां लेके प्रोड्यूस आते हैं, सारे प्रोड्यूसर्स वहां अपना खरीदने आ जाते हैं ट्रेडर्स, और वो 1% से 6% के बीच में मंडी सेस देते हैं, इसको बोलते हैं मंडी फीस। और ये मंडी फीस जो होती है ये स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट इस फीस से ही ये मंडी ऑर्गेनाइज करती है। बट अगर ये मंडी ही खत्म हो जाए, क्योंकि लोग पब्लिक मंडी की बजाय प्राइवेट मंडी में बेचने लग जाए, तो यहाँ पर सेस लेना मुश्किल हो जाएगा, सेस का अमाउंट खत्म हो जाएगा, तो ये मंडी खत्म हो जाएगी, और ये मंडी खत्म हो गई तो काम खत्म। अब एफसीआई कहां पर जाके प्रोक्योर करेगा? सो देयरफॉर इट हैज फेडरल इम्प्लीकेशंस, रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मार्केट फीस और इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है यहाँ पर। देन The new laws also do not mention in writing कि अच्छा बॉस एमएसपी जो है हमेशा कंटिन्यू करेगा। That's another issue. Then वो जो मैं आपको पर्सनल पॉइंट वाला बता रहा था कि एट टाइम्स फार्मर जो है वो ट्रेडर्स के साथ क्यों ट्रेड करना चाहते हैं, बिकॉज एट टाइम्स देयर रिलेशनशिप विद द ट्रेडर्स आर गुड, एंड पर्सनल इमरजेंसीज दे वांट मनी, तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट काम आ जाते हैं और वो रिलेशंस काम आ जाते हैं। देन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो मैं आपको बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अनइक्वल ट्रेड है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये मतलब नहीं है कि जो आपका इसका जो बेनिफिट है वो सारे फार्मर्स को मिल जाएगा। इसका फार्मर्स सिर्फ लार्ज फार्मर्स को मिलेगा, बिकॉज कॉर्पोरेट सिर्फ उन्हीं लोगों से डील करेगा जो बड़े बड़े फार्मर्स है, रादर देन डीलिंग विद स्मॉल फार्मर्स। एक कॉर्पोरेशन है, फॉर एग्जांपल आईटीसी या पेप्सी को, वो जाके गांव में कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा साइन करने जाएगा, उसके लिए एफिशिएंट ही नहीं है वो साइन करना। वो एक ही जगह पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जो बड़ा फार्मर है उससे हेल्प ले लेगा, और अगेन जो इनइक्विटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो और बढ़ जाएगी। तो इन ऑन पेपर तो आपने सब कुछ कर दिया, बट इन रियलिटी ये चीज नहीं हो पाएगी। सो बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ विलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स दैट यू हैव, so ultimately the benefit will be seized off or will be apportioned by the large farmers rather than and the traders rather than the farmers per se। और जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो बहुत अनइक्वल है। हमारे जो फार्मर्स हैं वो यूजुअली अनएजुकेटेड है, दे कांट कम्पीट लीगली विद दीज बिग हॉन्चोस। अल्टीमेटली बेनिफिट इन्हीं लोगों को मिल रहा है। देन अगेन द लास्ट पार्ट वेयर a large part of land is basically ecologically undesirable तरीके से produce हो रहा है, but at the same point of time the new laws does not do anything to basically convert this कि अच्छा हम वहां से सिर्फ ये खरीदेंगे। गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, गवर्नमेंट कहेगी कि सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि मैं पंजाब से पैडी लूंगी ही नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स विद सच काइंड ऑफ रूल फॉर एफसीआई, अपने आप लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। बट प्राइवेट सेक्टर अगर आ जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर अगर कहेगा कि मुझे राइस चाहिए तो राइस मिल जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर वो जो इकोलॉजिकली जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसका प्रमोशन वो जरूरी नहीं है प्रमोट करे द प्राइवेट सेक्टर।
और कई जगहों पे सॉइल भी सपोर्ट नहीं करती, बोलना बहुत आसान है, कई जगहों पे अब सॉइल भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर, जिस तरीके का एग्रीकल्चर पिछले 30 सालों से करा है, उस तरीके की वजह से अब जो उनका सॉइल क्वालिटी है, दैट हैज डिग्रेडेड टू सच एन एक्सटेंट that their soil does not have the capacity to generate these alternative crops now. And then you have these policies and recommendations की predictability of prices for all crops होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए. Then you have food security and food export कैसे कैसे increase होगा. Contract farming के ऊपर उनका एक recommendation है. Small and marginal farmers के लिए अमूल जैसा system है, और ecology के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसकी recommendation है. So just go through the conclusion part, that what has been recommended as alternatives. So this is again one of the most important readings that you should cover for your particular course. And now what we will do in tomorrow's session is that we will cover up this reading tomorrow or day after, whatever is the case. We will cover Rakesh Mohan's reading, which is again a very important reading, a lengthy reading, but an important one for your particular examination, and also for your competitive examination, because that's a comprehensive one. Okay. So this will be our project for tomorrow or day after. The timings will be similar. Okay guys, thank you very much. See you tomorrow or day after.